Hello, good morning students. So today I am going to start the new concept of mathematics, that is the limits. So limit of function is the very important concept of calculus. So total structure of calculus is built on this concept, that is the limit of the function. So before starting the limit of function, we recall the last topic, that is function. In previous topic we discussed the concept function, the definition of function, some types of function, that is one function, injective function, onto function, surjective function, minimum function, into function. This is some types of function. After that we will take on some basic types of function. Basic function, that is a polynomial function, a rational function, constant function, radical function, square function, cube function. In polynomial function we discuss the linear function, the quadratic function, the cubic function, and important their domain and range. After that we discuss the logarithmic function and exponential function. And every function we always discuss their graph, their range and their domain. So domain means what? The set of all points where function is defined, that is the x. And domain means what? The y. Means वहाँ पर जो y axis होती, that is the range of the function, and x means the domain of the function, right? After that some more functions, that is a modulus function, greatest integer function, signum function, and fractional part function. That is all concept function. So total calculus is the important branch of mathematics, and total structure of calculus is built on this concept, that is limit of function. So what is the concept limit of function? So we illustrate one example. See, this is a circle. We inscribed one polygon, n-sided regular polygon. So here we inscribe one pentagon, 5 sides. And by this observation we say that the area of this polygon, this pentagon, is definitely less than the area of circle. One more, this is a circle. We inscribe hexagon. Six-sided regular polygon. So still यहाँ पर 5 sides है, यहाँ पर 6 sides है polygon के, but still the side is increases, but area of this hexagon is definitely less than the area of circle. So here this is one more example. We inscribe this n-sided regular polygon. But so this is a n number of sides of regular polygon. What is the exact concept of limit of a function? In first diagram there are 5 sides polygon, means pentagon. So area of this pentagon is definitely less than area of circle. This is hexagon, 6-sided regular polygon. Side increase किए, but area is still less than the area of circle. Area of this hexagon is definitely less than the area of this circle. यहाँ पर n-sided polygon inscribe किया है, regular polygon in the circle. So here area of this polygon is definitely less than the area of circle. Means what? If number of n-sided increases, the difference between the area of polygon and area of circle decreases. It means what? N approaches this is the
area of this regular polygon approaches to the area of this circle, then we say that the limit of the area of regular polygon is the area of circle when n is infinitely large. Infinitely large. So what is the concept of limit? If n-sided regular polygon, if n is increases, the area of polygon is approaches to the area of circle, is approaches to the area of circle. So this is called the limit of area of regular polygon is the area of circle when what? N is infinitely large. N is infinitely large means again we draw a circle. So this is a n-sided regular polygon. N infinitely large. Still not equal, but which is very approaches to the area of circle. Very approaches to the area of circle. So area of this n-sided regular polygon is exactly not equal, but which is approaches to the area of circle. So this is the concept. The limit of area of regular polygon is the area of circle. Okay, so this is the limit of the function. So let us see the next concept of limit. Before that, see the example. We define one function. This f of x is equal to 2x plus 5. F of x is equal to 2x plus 5. We have to see the behavior of this function when x is approaches to 3. X is approaches to 3. It means what? X is closer and closer. Closer and closer to 3. It means what? X is very nearest to 3. Then the behavior of this function will be what? This will be 3 into 2. So f of x becomes 3 into 2 is 6. 6 plus 5 is equal to what? 1. So x is closer and closer to 3 if x is approaches to 3. So this f of x approaches to what? 11. Means as means what? If f of x tends to 11 as x tends to 3. Tends to what? 3. So this is tends to. Tends to means what? Which is approaches to, nearest to, closer and closer to. That is called as what? Tends to. Function f of x tends to 11 as x tends to what? 3. So we write this as, that is what? F of x function tends to 11 as x tends to 3. So this arrow, one-sided arrow, that is tends to. So here f of x we define function 2x plus 5. This is polynomial function, and we have to see the behavior of this function when x is approaches to 3. When x is closer and closer to 3. It means what? यहाँ पर अगर 3 रखा, 3 2 is 6, 6 plus 5 how much? 11. Means when x approaches to 3, f of x approaches to 11. जैसे जैसे x is a variable, this x is a variable. यहाँ पर 3 है, this is a real number, and x 3 है, x is a variable which approaches to 3, nearest to 3, either from the left hand side or from the right hand side. लेफ्ट साइड की तरफ से या राइट साइड की तरफ से x is variable which approaches to 3. This function approaches to 11. It means that fx tends to 11 when x as x tends to 3. So this is the meaning of tends to. So we have to see one more example. X tends to a. The meaning of x tends to a. Meaning of x tends to a. So this is the important concept. Total limit x tends to x tends to x tends to. What is the meaning of x tends to? X is a variable.
3 is a constant term, 3 is a real number. When x tends to 3, this f of x tends to what? 11. So here means what? X is approaches to 3, then f of x approaches to what? 11. Okay, we'll see one more example for the concept of meaning of x tends to a. This x is a variable and a is a real number. In this example, 3 is a real number. Okay, and function is what? 2x plus 5. We see one more example for the concept of that the x tends to a. Let us discuss one more example for the meaning concept x tends to a. x tends to a का meaning क्या है? देखो ये function है f of x, that is x square minus 4 divided by x minus 2. So we know that this is a rational function and this defined only when denominator not equal to 0. So denominator means what? X is not equal to 2. So this function is defined only when x is not equal to 2. So here we have to see the behavior of this function when x approaches to 2. हम x की 2 की तरफ जब x अप्रोच होता है तो ये फंक्शन का बिहेवियर क्या होता है, वो फंक्शन कहाँ अप्रोच होता है, ये हमें देखना है. So see this table. So here this is the first table. So in first row this is the values of x. Suppose first value is 1, 1.2, 1.5, 1.8, 1.9, 1.99. So it means what? X is approaches to 2. 2 की तरफ अप्रोच हो रहा है बट नॉट एग्जैक्टली 2 बिकॉज वी कांट डिफाइन दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2. So means what? This function is defined when x is not equal to 2. If x is equal to 2, 2 minus 2 is what? 0. So this function becomes what? अब यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखो, 1 square is 1, 1 minus 4 is minus 3, minus 3 upon 1 minus 2 is minus 1, minus 3 upon minus 1 is plus 3. So this is 3. If we put x is equal to 1.2, यहाँ पर 1.2 अगर हमने पुट किया तो डेफिनेटली इट बिकम्स 3.2. यहाँ पर 1.5 रखा तो डेफिनेटली इट बिकम्स 3.5. So 1.8 यहाँ पर रिप्लेस किया सो दैट बिकम्स 3.8. So 1.9 रिप्लेस करके देखो, इट इज पार्ट ऑफ कैलकुलेशन, दिस बिकम्स 3.9. और फाइनली इफ वी पुट x is equal to 1.99 here, so you will get this is 3.99. So it means what? X is approaches to 2, f of x approaches to 4, but not exactly 4, not exactly 2. It is very very nearest to 2, very very close to 2, but not exactly 2. X approaches to 2, f of x approaches to 4. It means what? X tends to 2, f of x tends to 4. So here now one more table here. Same function. This is the second table. This is x, values of x. Suppose 3, 2.9, 2.7, 2.2, 2.1, 2.001. f of x will be. अब देखो x की वैल्यू मैंने ग्रेटर देन 2 ली है, यहाँ पर x की वैल्यू लेस देन 2 थी विच इज वेरी वेरी नियरेस्ट टू 2. यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, 2 के ज्यादा है, बट नियरेस्ट टू 2 क्या है? नियरेस्ट टू अप्रोचेस टू 2 क्या है? 2 है. वो कहाँ पर अप्रोच हो रही? 2 की तरफ ही अप्रोच हो रही. मीन्स ये देखो ये रियल नंबर लाइन है, यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है. And this is variable which moves from left hand side or from right hand side. बट वो अप्रोच कहाँ हो रहा है? 2 की तरफ अप्रोच हो रहा है. फ्रॉम राइट साइड की तरफ से तो यहाँ पर व्हाट? 3, 2.9, 2.8, 2.5, 2.4, 2.2, 2.001, 2.00001.
द फंक्शन विल बी व्हाट, यहाँ पर 3 रखो, क्या होता है 3 स्क्वायर इज व्हाट 9, 9 माइनस 4 5, 3 माइनस 2 1, 5 by 1 5, this will be what 5.9, 4.9, this is 4.7, this is 4.4, this is 4.1, and this will be 4.001, 4.001. हम क्या देख रहे हैं, ये टेंस टू का मीनिंग क्या है, x टेंस टू 2, x टेंस टू 3, x टेंस टू ये क्या है, एक्चुअल कंसेप्ट x टेंस टू ये है, ये इज रियल नंबर एंड x इज अ वेरिएबल, बट इन दिस एग्जांपल वी डिफाइन अ फंक्शन, this function is a rational function and we well known about rational function. Rational function is defined only when denominator is not equal to 0. यहाँ पर denominator क्या है, x minus 2 है, so x minus 2 is not equal to 0 means x is not equal to 0. So this function defined for all real number except 2, सिर्फ 2 छोड़ के. So here this x is approaches to 2, f of x approaches to 4, means function f of x approaches 4 as x approaches to 2. Function approaches to 4 as x approaches to 2. It means what? F of x tends to 4 as x tends to 2. So we write in symbolic form, f of x tends to 4 as x tends to 2. So this first table from the left hand side, x left hand side से अप्रोच हो रहा है, और या इस सेकंड में x राइट साइड से अप्रोच हो रहा है towards this number 2. So here in second example, see carefully, x approaches to 2, very nearest to 2, f of x approaches to 4. So here again we say that f of x tends to 4 as x tends to 2. So this arrow, this single sided arrow, this is double sided arrow. So ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, x tends to 2, x tends to 2. So this function has limit, we say that. So this we write limit of this function, ये function limit as x tends to 2, this will be what 4. Limit of this function as x tends to 2 is what 4. So we write this is actual function क्या है, function है x square minus 4 divided by x minus 2 as x tends to 2 is equal to what 4. Limit as x tends to 2, function is what, which function, x square minus 4 upon x minus 2, which is equal to what 4. So this is the concept limit of the function. So not every time this complete name we write in short, limit as x tends to 2, x square minus 4 divided by x minus 2 is equal to what 4. So this is important. डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, हमने कैसे वो डिफाइन किया वो इंपॉर्टेंट है, हम एग्जाम्पल के थ्रू उसको डिफाइन करेंगे. सो ये फंक्शन का लिमिट कितना आ रहा है 4 आ रहा है, कैसे कब, जब x अप्रोचेस 2 हो रहा है, जैसे जैसे x 2 की तरफ अप्रोच हो रहा है वैसे वैसे फंक्शन कहाँ अप्रोच हो रहा है 4 की तरफ अप्रोच हो रहा है. सो बिहेवियर ऑफ दिस फंक्शन चेंजेस व्हेन x चेंजेस, जैसे जैसे x चेंज हो जाएगा फंक्शन का लिमिट भी चेंज हो जाएगा. सो दिस इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन.
विच इज वेरी वेरी नियरेस्ट टू। हमने जब अपने जो एग्जाम्पल देखा था सर्कल का और पॉलीगॉन का, n साइडेड पॉलीगॉन, इफ वी इंक्रीजेस n, the difference between area of polygon and area of circle decreases. It means what? The limit of area of polygon is as the area of circle. Okay, so वो था illustration that example area का, but this is the actual concept limit of the function. So ये meaning important है x tends to 2. x टेंस टू 2 का मीनिंग क्या होता है? x टेंस टू 2 का मीनिंग होता है x इज नॉट इक्वल टू 2, x इज नॉट इक्वल टू 2 बट आइदर ग्रेटर देन 2 और लेस देन 2। ये लेस देन 2 है, ये ग्रेटर देन 2 है, 2 से ज्यादा है, 2 से कम है, बट नॉट एग्जैक्टली 2। सो इट इज वेरी सिंपल, x इज नॉट इक्वल टू 2 मीन्स व्हाट? x टेंस टू x is not equal to 2 means x tends to 2, either less than 2 or greater than 2। less than 2 कौन से हैं? 1.99, 1.9, 1.8, 1.5, 1.21। greater than 2 means what? 2.001, 2.1, 2.2, 2.7, 2.93, but not exactly 2। so this is the exact meaning of x tends to 2। बट डेफिनेशन में क्या है? x tends to a है, a इज द रियल नंबर, x इज अ वेरिएबल, सो वही है। x tends to a का मीनिंग क्या है? x इज नॉट इक्वल टू a, विच इज कॉल्ड एज व्हाट? x tends to a। इज इट क्लियर? सो वी सी द नेक्स्ट कंसेप्ट। ओके, सी द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज x tends to a minus। next concept, x tends to a plus। so in short we write x tends to a minus and यहाँ पर x tends to a plus। so minus a and a minus are completely different। this is a negative of a, negative sign, negative number of a। this is a minus means वो क्या है हम देखेंगे यहाँ पर देखो x टेंस टू 2 हमने देखा था। x टेंस टू 2 का मीनिंग क्या होता है? x इज नॉट इक्वल टू 2, x इज अप्रोचेस टू 2 बट नॉट एग्जैक्टली 2। x is very very nearest to 2 but not exactly 2, that is x tends to 2, right? either from left side or from right side। so यहाँ पर देखो x approaches, x कहाँ से अप्रोच हो रहा है? 2 के लेफ्ट साइड से, 1, 1.2, 1.5, 1.8, 1.9, 1.99 लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच हो रहा है। इट मीन्स x tends to 2 minus। so this is a real line। यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर ये 2 है। सो ये लेफ्ट हैंड साइड से x अप्रोच हो रहा है। x इज वेरिएबल विच अप्रोचेस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टूवर्ड्स 2, अप्रोचेस टूवर्ड्स 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड विच इज डिनोटेड बाय व्हाट? x tends to 2 minus means what? x is less than 2, that is x tends to 2 minus। x is a variable which approaches to 2 from left hand side means what? x is less than 2। यहाँ पर देखो ये जो x है 3, 2, 2.7, 2.2, 2.1, 2.001 मीन्स x ये नंबर लाइन पे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। 1 की तरफ से अप्रोच हो रहा है, यहाँ से 3 to 2 की तरफ अप्रोच हो रहा है। 3, 2.9, 2.7, 2.2, 2.1, 2.001 अप्रोचेस फ्रॉम राइट साइड means what? x is greater than 2, x is greater than 2, exactly not equal to 2, it means x tends to 2 plus, x tends to what? 2 plus। so this is x tends to 2 minus, this x tends to 2 plus। so example है, हमें तो concept define करना है। so concept कौन सी? x tends to a minus। so x is a variable, a is a real number, no doubt x variable है, ये real number है। x अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू a, लेफ्ट हैंड साइड से a की तरफ अप्रोच हो रहा है। सो दिस इज x इज लेस देन a मीन्स x इज नॉट इक्वल टू a।
So which is right what x tends to a minus. So this is x tends to a minus. ये एग्जाम्पल हुआ है, ये कंसेप्ट है. फर्स्ट कंसेप्ट क्या है, x tends to a माइनस. सेकंड कंसेप्ट क्या है, x tends to a plus. x tends to a plus means what? X is approaches to a from right side towards a, which is definitely greater than a. So x is greater than a means x is not equal to a, which written as x tends to a plus. So this is x tends to a plus, this is x tends to a minus. अभी पूरा टॉपिक में टेंस टू आ जाएंगे. x टेंस टू 5, x टेंस टू 7. सिर्फ आपको इतना याद रखना है, x टेंस टू 7 का मीनिंग क्या होता है, x इज नॉट इक्वल टू 7. अगर x टेंस टू π/2 है तो उसका मीनिंग क्या होता है, x इज नॉट इक्वल टू π/2. नॉट इक्वल है बट विच इज वेरी वेरी अप्रोचेस टू π/2. वो बहुत ही नियरेस्ट है, बहुत ही क्लोज है π/2 का, बट आइदर ग्रेटर देन π/2 होगा, नहीं तो लेस देन π/2 होगा. राइट. सो आज इतने ही कंसेप्ट हो गए हैं. मैं यहाँ पर थोड़ा इरेज करता हूँ, आपको ब्रीफली रिकॉल करता हूँ. ये जो फंक्शन तो हो गया अपना. सो x टेंड्स टू a का मीनिंग क्या है, x टेंड्स टू a. x टेंड्स टू a का मीनिंग x इज नॉट इक्वल टू a. x टेंड्स टू a माइनस, इसका मीनिंग है x इज लेस देन a. x टेंड्स टू a प्लस, इसका मीनिंग x इज ग्रेटर देन a. बस इतना ही 3 याद रखना है आपको आज का लेक्चर का. मेन तो वही है. x टेंड्स टू a का मीनिंग x इज वेरी वेरी अप्रोचेस टू a बट नॉट एग्जैक्टली a. x टेंड्स टू a माइनस का मीनिंग क्या होता है, x इज वेरी वेरी अप्रोचेस टू a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट साइड की तरफ से a को अप्रोच हो रहा है. ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू a बट x इज लेस देन a. x टेंड्स टू a प्लस का मीनिंग क्या है, x इज अप्रोचेस टू a फ्रॉम राइट साइड. राइट साइड की तरफ से. सो आपको पता है राइट साइड की तरफ से पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड की तरफ से क्या होता है, निगेटिव होता है. सो x अप्रोचेस टू a फ्रॉम राइट साइड means what, x is greater than a. Greater than a means right hand, less than a means what, left hand. So this is the concept, x tends to a. Okay, so this is the sufficient study for the limit. You have to write the notes from the textbook of concept of x tends to a, concept of x tends to a minus, and the concept of x tends to a plus. Okay, we'll stop here. Thank you very much.